अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, हमारे चैनल पे जो पीसी बिल्ड की सीरीज़ है, आज उसकी छठी वीडियो है और आज हमने बजट सेलेक्ट किया है 40,000। अगर आपका बजट 40,000 से नीचे है, 10,000 से लेकर 30,000 तक आपका बजट है, तो मैंने नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका बजट 10,000 से लेकर 30,000 तक है तो उन वीडियो के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और आज की पीसी बिल्ड की बात करें तो आज जो भी हम इस पीसी बिल्ड में जो भी कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे वो आपने यूज़ में लेने हैं। और आज का जो पीसी बिल्ड है, आप इस पीसी पे 4K रेजोल्यूशन की गेम इजीली खरीद सकते हैं 30 FPS पे। और अगर आप 1080p लेवल की गेम इस पीसी पे आप करना चाहें तो वो भी आप 150 FPS आप इस पीसी पे इजीली अचीव कर लेंगे। और अगर आप कोई हैवी टास्क करते हैं जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर आप कोई भी हैवी टास्क करते हैं तो आप इस पीसी पे इजीली कर सकेंगे। तो चलो गाइज, आज की पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं। तो आज की पीसी बिल्ड में जो हम फर्स्ट कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं वो है प्रोसेसर। और प्रोसेसर के केस पे हम यूज़ कर रहे हैं इंटेल की तरफ से आने वाला Core i5 थर्ड जनरेशन। इसके मॉडल्स नंबर आप सुन लो, 3470, 3570 और 3570 के। आपको ये प्रोसेसर यूज़ में मिल जाएगा 5,000 से लेकर 6,000 में आपको इजीली मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट पर। और प्रोसेसर के मैं आपको स्पेक्स बता दूं, इसमें आते हैं 4 कोर 4 थ्रेड। और क्लॉक स्पीड की बात करें तो 3.4 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड आती है। अगर इस प्रोसेसर को आप ओवर क्लॉक करते हैं तो ओवर क्लॉक करने के बाद जो आपको स्पीड मिलेगी, बूस्ट स्पीड, वो होगी 3.80 गीगाहर्ट्ज़ तकरीबन। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 40,000 में जो हमारा मदरबोर्ड आता है वो उस पर आप ओवर क्लॉक नहीं कर सकेंगे। तो 3.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। और मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड की केस में आपको मिल जाएगा H61M-K। लगभग पाकिस्तान में ये मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा यूज़ में 3,000 5,000 का आपको इजीली मिल जाएगा। और इस मदरबोर्ड का मैं बता दूं आपको, ये सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन दोनों प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। और एक बात और, इसमें जो सॉकेट है वो है LG1155, जो हमारे प्रोसेसर का सपोर्टेड सॉकेट है, वो आपको इसमें मिल जाएगा। और मदरबोर्ड के बाद हमारी आ जाती है रैम। तो रैम के केस में हम यूज़ कर रहे हैं 8GB की DDR3 की 16 मेगाहर्ट्ज़। तो ये रैम आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगी 3,000 की या 3,500 की, आपको इजीली ऑफलाइन मार्केट पर मिल जाएगी। और रैम के बाद हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क की केस में आपको मिल जाएगी पहले HDD की 500GB और SSD में आपको मिल जाएगी 128GB की। और HDD की प्राइस में आपको बता दूँ 1,500 और SSD की प्राइस में आपको बता दूँ वो है 2,000 की। हार्ड डिस्क के बाद हमारी आ जाती है केसिंग में, आपने ले लेनी है डेल या HP की कोई भी, आपने वो लेनी है नॉर्मल सी जो कि 500 रुपीज़ की होती है या 700 रुपीज़ की नॉर्मल सी आपने केसिंग ले लेनी है। लेकिन आपने डेस्कटॉप में नहीं लेनी, आपने टावर में ले लेनी है। और केसिंग के बाद हमारी आ जाती है PSU। और PSU के केस में हम यूज़ कर रहे हैं 500 वाट की। ये आपको ऑफलाइन तकरीबन 2,000 की मिल जाएगी इजीली। और PSU के बाद हमारा आ जाता है मेन कंपोनेंट जो हमारी गेम को रन करता है, वो है हमारा ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड के केस में हम यूज़ कर रहे हैं AMD की तरफ से आने वाला RX 580। इसकी मेमोरी है 8GB और मेमोरी बस है 256 बिट और मेमोरी टाइप है इसकी GDDR5। और ये ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा ऑफलाइन पर इजीली 22,000 का। तो चलो, हमारा पीसी बिल्ड हो चुका है और इसके मैं आपको बेंचमार्क्स दिखाता हूँ। Come on, I just went to my car.
Reinforce! Fire on his position! Keep your eyes peeled! Here's the leech. Here! My head's spinning. Oi! Come out, you coward! Clever fucking beasts! I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Die, vermin! A strength I never knew I had. Steady, boys! We've got one of them here! This shouldn't be possible. He's a killer! The Loire welcome you, and so do I. I'm counting on you the sooner we end, Marcana. Growing up, I always knew my life would be dedicated to helping people. My mother thought I would become a school teacher, if you can believe that. तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी यूज़फुली लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।